Assalamu alaikum. Hello and welcome to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. This video is about Computer Science grade 9th और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम्स का जो टॉपिक है सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग को ठीक है. So if you find this video helpful then do not forget to like, share and subscribe as well. So let's start with circuit switching. सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये दो डिफरेंट तरह की अप्रोचेज़ हैं ठीक है नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए. हर एक के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ उनकी एप्लीकेशंस भी हैं ठीक है. सो अगर हम सर्किट स्विचिंग की बात करें तो सर्किट स्विचिंग में जो है वो रिसोर्सेज रिजर्व होते हैं कम्युनिकेशन सेशन के लिए ठीक है. और अगर हम जो पैकेट स्विचिंग की बात करें तो उसमें जो रिसोर्सेज हैं वो रिजर्व नहीं होते ठीक है. It's basically method of communication where a dedicated physical path is established between two communicating devices. ठीक है. Once the circuit is established, data is transmitted over the path without interruption until the session is terminated. ठीक है. और ये जो फिज़िकल कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है ठीक है, इट्स बेसिकली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन सेशन. ओके. सर्किट स्विचिंग की जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं डेडिकेटेड पाथ बेसिकली आपके पास वो फिज़िकल कनेक्शन होता है ठीक है, जो दो डिवाइसेस सेंडर और रिसीवर के दरमियान में जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है ठीक है. Alright, then we have guaranteed bandwidth. It basically provides predictable performance. Then fixed duration is when the connection is established for a predetermined period, typically until the communication is complete. And circuit setup before data transmission begins, a circuit must be established between the communicating parties. Alright. Then we have examples of circuit switching. These are traditional telephone systems, leased lines, and some older data networks. Okay. Let us discuss about one detailed example of circuit switching. It's a traditional telephone call uses circuit switching. Okay. When you dial a number, a physical path is established between your phone and the recept's phone. Okay. This path remains dedicated for the duration of the call, ensuring a clear and uninterrupted conversation. Alright, then we have advantages of circuit switching. Guaranteed quality of service. The dedicated path ensures low latency and minimal errors. Predictable performance. The fixed bandwidth provides consistent throughput and it's suitable for real-time applications as well. Okay. Obviously, we have some disadvantages of circuit switching, and these are inefficient resource utilization, limited scalability, and higher cost. Okay, setup and maintenance of circuit switching is can be expensive. और जब हम इसमें न्यू कनेक्शंस को ऐड करते हैं सो इट वुड बी चैलेंजिंग ठीक है, जहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज हों उन केसेस में स्पेशली ठीक है. नाउ वी हैव पैकेट switching. If we talk about packet switching, it's basically the method of data transmission where data is broken down into smaller units. ठीक है, उसको small chunks में divide कर दिया जाता है जिनको हम कहते हैं पैकेट्स. ठीक है, पैकेट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट होते हैं नेटवर्क पे, बट जब वो एंड पे रिसीवर साइड पे जाते हैं तो इन पैकेट्स को जो है वो रीअसेंबल कर दिया जाता है. ठीक है, ईच पैकेट is stored at a node, router or switch until the entire packet is received before it's forwarded to the next. Okay. Key characteristics of packet switching are data segmentation. इसमें जो है वो जो डेटा है उसको स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, हर एक पैकेट में उसमें जो है वो हेडर होता है. ठीक है, इंफॉर्मेशन होती है उसमें उस डेटा की. ठीक है, एंड डेटा पेलोड एज वेल. स्टोर एंड फॉरवर्ड. Packets जो है basically packets are stored at intermediate nodes until the entire packet is received before being forwarded. And dynamic routing is basically when packets are routed based on the destination address and network conditions, allowing for flexibility. Okay. Error detection and correction. Packets include error checking mechanisms to detect and potentially correct transmission errors. Okay. Alright, then we have examples of packet switching. It's the internet, local area networks, and wide area networks. Okay. Basically, अगर हम एक डिटेल एग्जांपल की बात करें so it would be when you send an email, it's broken down into smaller packets. Each packet contains a portion of the small email's content. उसको हम एज अ पैकेट कहेंगे कि उस ईमेल को छोटे छोटे पैकेट्स में
छोटे छोटे चंक्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है सेंडर की, रिसिप्ट की, उसमें जो सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है पैकेट्स का, ठीक है। पैकेट की जो क्रिएशन होती है, बेसिकली योर ईमेल क्लाइंट डिवाइड्स द ईमेल इनटू मल्टीपल पैकेट्स each with a unique identifier, okay. Then routing में अगर हम कहें, the first packet is sent to a nearby router. Router checks the destination address and uses routing tables. और अगर हम जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक में था स्टोर एंड फॉरवर्ड, उसकी बात करें, so the router stores the packet until it receives the entire packet, and transmission the packet travels through the network, okay. passes through multiple routers and switches. पैकेट लॉस और डिले, अगर कहीं पे जो है वो पैकेट नहीं रिसीव हुआ कहीं पे, या जो है उसमें डिले आ रहा है, सो बेसिकली नेटवर्क कंजेशन और एरर्स की वजह से जो है वो, या फिर उसमें जो है सेंडर जो डिवाइस है उससे उसको जो है वो रीट्रांसमिट करना होगा, ठीक है। एंड रीअसेंबल, जो डेस्टिनेशन होती है वहाँ पे जो सारे पैकेट्स होते हैं उनको रीअसेंबल किया जाता है करेक्ट ऑर्डर में, जो है वो ओरिजिनल ईमेल जो है वो रिसीवर को मिलती है, ठीक है। जैसे हमने कहा ना कि सेंडिंग साइड से जो है वो पैकेट्स डिफरेंट रूट्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। उसमें जो है शायद कोई पैकेट पहले चला जाए, कोई बाद में चला जाए, इस तरह से। बट ऑन रिसीविंग साइड वो जो तमाम पैकेट्स हैं उनको ये सिंबल किया जाता है, ठीक है। और जो है वो कंप्लीट ईमेल ही मिलती है, ठीक है। देन वी हैव एडवांटेजेस ऑफ पैकेट स्विचिंग। It's efficient resource utilization, reliability, okay. Efficient resource utilization की अगर हम बात करें, so multiple conversations can share the same network resources, and if a packet is lost or damaged, only that packets need to be retransmitted. अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि लाइक आपको जो है वो पूरे के पूरे जो पैकेट्स है या जो सारा के सारा मैसेज है उसको नहीं आपको रीअसेंबल करना पड़ता, बल्कि जस्ट उसी मैसेज को आपने रीट्रांसमिट करना होता है जो कि लॉस्ट है या जो कि डैमेज्ड है, ठीक है। एंड ऑल्सो इट्स फ्लेक्सिबल, ठीक है। नेटवर्क्स कैन अडाप्ट द चेंजिंग ट्रैफिक पैटर्न्स एंड नेटवर्क कंडीशंस एज वेल, ओके। Then we have disadvantages of packet switching. It's variable delay. नेटवर्क की वजह से जो है वो डिले आ सकता है, ठीक है, ट्रांसमिशन में। पोटेंशियल फॉर पैकेट लॉस, पैकेट्स में बी लॉस्ट और करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ठीक है। requires more complex protocols. Packet switching requires protocols like TCP/IP to handle packet segmentation, reassembly, and error control, okay. So that was all about packet switching and circuit switching. I hope this video will be helpful for you, and do not forget to like, share and subscribe as well, okay. Allah Hafiz.